Hello everyone and welcome to PendulumEdu, you guys. Good morning. I have Vishwasurupam, Vishali, Kunal, Sanjeev. These people have joined me. As of now, I can see all of your comments, guys. Thank you for joining in. And yes, we've already started Vishali. I hope that you can now hear me and see me both, right? So let's begin with the session for today, guys, and I hope and believe that you guys have been practicing the past vocabulary that we have done. And every Sunday, as we bring in the quiz, tomorrow will be another quiz for you guys for the week that we have discussed. There have been a few vocabulary words for this week, but not a problem. There is a whole set of quiz planned for you, okay? So you can practice that. And anybody who has any sort of doubts, guys, you guys can keep on asking me throughout the session, okay? Also remember this one point, that whenever we go with this editorial session, that definitely makes you work on your current affairs. So just make sure that whatever important point you see that is pertaining or related to your current affairs, you can keep noting them, okay? Thank you, Vishali. Thank you. So, chalo, let's quickly begin. Okay. Now, the article for today, it heads as dizzying climb. Okay, dizzying climb. Now, here dizzying has been used as an adjective. Why? Because it is qualifying this action, climb, the dizzying climb. Why the climb is dizzying? The reason is it is not steady. यहाँ पर आप climb को actually you can take it as in you can take it as a situation wherein we're talking about we are moving upwards, going upwards. This trend actually is dizzying, ठीक है? It is not steady. कहते हैं ना unsteady, unstable, ठीक है? वो है अस्थिर, ठीक है? उस चीज में एक steadiness नहीं है, एक समानता नहीं है. This is on retail inflation, guys. This is retail inflation की बात पर हम discussion कर रहे हैं कि ये जो inflation rate बढ़ रहा है ये बहुत unsteady है, ठीक है? चीजें inflation को लेके बहुत unsteady है. Okay, Anup, Tanisha has also joined us. All right, great, guys. So here, when we talk of inflation, we are all, worried about it. We're all perturbed. Perturbed is another word for worried, ठीक है? परेशान होना, that is one word for you can use, that's perturbed. So when we have to say or when we have to tell that we are worried about something, we can use perturbed. Getting it? Okay. So inflation जो rate है या retail inflation जो हम बात करें, जो हम आम आदमी के लिए है, that is unsteady at the present moment. Inflation must not be allowed to pose a threat to macroeconomic stability. Now, it should not hamper the macroeconomic stability. That means the economy on a large scale. See, there's microeconomy, then there is macroeconomy. So micro is, we're talking about the small parts. Macro on the whole that we're talking about. So they say that inflation should not threaten or should not hamper the macroeconomic stability. On the whole, if the stability gets hampered, then it will be a problem. Rahul, yes, perturbed will be worried, or you can worried, that is also anxious. Synonym, ठीक है? Disturbed होना, ठीक है? अगर आप किसी बात को लेके disturbed हो, worried हो, that will be perturbed. Okay? Okay, Rahul, I hope this is clear. Deepak, good morning. Alright, chalo. Now, it further says the latest retail inflation readings should on the face of it, offer monetary authorities a fair amount of comfort, given that the consumer price index rose by 4.06% in January, making a deceleration for a second straight month to a 16-month low. Now we're going to discuss about deceleration. I'm going to talk about on the face of it as well. On the face of it,
that is clearly visible. That is clearly visible. Something that is clearly visible will be, you can say it is on the face of it. There's no proof to it, but what you can see is what you see is what you say on the face of it. For example, the police did not have any sort of proof, but it arrested him on the face of it. Like whatever seemed, जैसे prima facie होता है ना, prima facie evidence, on the basis of prima facie evidence, उसका मतलब जो सामने दिख रहा है, कोई सबूत नहीं है, प्रॉपर कोई चीज हमारे पास नहीं है, बट जो जैसा दिख रहा है, on the basis of that if you take an action, that is on the face of it. Okay, I hope this is clear. I hope this makes it clear, guys. Yes, Kunal, vocab session is one session that is common for every, I would say for any competitive exam that you take, whether it's banking, SSC, whether you go for defense examinations or civil services examination, any examination, Kunal, this is it. Like this is a comprehensive thing that we provide you. See, here the moment we're discussing this economic, article, if you see this may be asked in any particular examination that you sit for, but it is more important for banking, because with that perspective we are talking about finance, we're talking about economic stability, then it becomes more important for the banking section. So this, whatever articles that we discuss with you and the vocabulary that we discuss, it's not particularly for some particular examination, it's for everything. Okay. कप्तान says like the red-handed में तो आपके पास सबूत है, like red-handed में तो आप देख रहे हो उसको काम करते हुए. यहाँ पर आपने किसी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, बट आपने जो सीन देखा, आप उसके शक के बिना पर जो चीज आपको दिख रही है कि हाँ ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट. ओके कप्तान, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वहां पर आप वो काम करते हुए उनको पकड़ते हो, लेकिन इधर ऑन द फेस ऑफ इट आप एग्जैक्टली वो काम करते हुए नहीं पकड़ रहे, बट जो चीज दिख रही है आप उसको सबूत मान के आप उनको पकड़ रहे हो. यस राहुल, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आए उस एग्जाम में काम आएगा, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अभी कहते हैं कि जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग्स थी, अगर देखी जाए, क्योंकि कोई सबूत नहीं है बट सिर्फ उनको देख के ऑन द फेस ऑफ इट, दे ऑफर मॉनेटरी अथॉरिटीज अ फेयर अमाउंट ऑफ कंफर्ट. भाई थोड़ा सा कंफर्ट देते हैं जो अभी की जो रीसेंट इन्फ्लेशन रेट्स हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किससे बढ़ चुका है? 4.06 जनवरी में. मेकिंग अ डिसेलरेशन इज नाउन दैट मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू. Decrease, or the point is that diminishing, it is going down, making a deceleration for second straight month to a low, 16th month low. तो marking a CPI जो है इतने पॉइंट से बड़ा है, ये पॉइंट सबसे लो है 16 मंथ में. दिस इज द लोएस्ट पॉइंट दैट वी हैव सीन. There was a deceleration for a second straight month. Now, inflation appears to have cooled after having stayed stubbornly stuck. Stubbornly is an adverb. I'm wiping off the screen and then I'll explain it to you. Stubbornly, guys, is an adverb. It means in an adamant manner. What is that? जिद करना, जब आप किसी बात पर अड़ जाते हो, जिद पूर्वक या फिर हठ पूर्वक. अगर एक जिद्दी ढंग से इन्फ्लेशन जो था वो चिपक गया था above the RBI's upper tolerance threshold of 6% for 6 months to November, बट अभी हम इसको देख रहे हैं कि थोड़ा सा लो गया. ओके, Rahul, quickly, who knows about consumer price index? Rahul is asking, what is consumer price index? Now, when you are talking about consumer price index, guys, quickly, anybody who knows, who is from economic backdrop here? कौन है जो commerce backdrop से है? जल्दी से बताएंगे.
Quickly. Okay, nobody's from commerce backdrop, is it? Ziddi, okay. Sanjeev, Ziddi and Ariel will be, okay, आप stubbornly के लिए answer कर रहे हो. Rahul, if I talk about consumer price index as you have asked, consumer price index would be, this is consumer का price, ठीक है? तो मतलब the point, it is the weighted average. It is the weighted average of how much, purchase capacity does a consumer hold. कितनी कैपेसिटी होती है एक कंज्यूमर की, उसका जो एवरेज वेटेज होता है वो सीपीआई होता है. ओके, यस, लाइक पहले वो ज्यादा पे कर पा रहे, उनकी कैपेसिटी अगर कुछ समय पहले ज्यादा थी, अभी कम हो गए, तो उन सब का वो वेटेड एवरेज होता है. यस तनीषा, दैट वुड बी एब्सोल्युटली राइट. आई होप राहुल हैज गॉट इट. चलिए, शैल वी गो अहेड राहुल now? Okay, chalo. So was stubbornly got stuck. So stubbornly, as I said, it's an adamant manner. Zidhat purvak wo ek jagah pe chipak gaya tha. Helped by an appreciable softening in food prices. Now later it was helped by appreciable. It is an adjective which means favorable. Favorable जो softening था, food prices में थोड़ा सा गिरावट आई थी, so that was better. Specifically, the consumer food price index reflected a gain of mere 1.89% last month as vegetable prices saw a disinflation of 15.8%. Disinflation, vegetable prices में there was disinflation. Disinflation means reduction. Disinflation is noun, reduction गिरावट. तो वेजिटेबल के प्राइसेस में there was disinflation of 15.8% and cereal prices eased considerably for a second month in the wake of Kharif crop arrivals. Even जो cereals थे जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं cereals, उनमें भी गिरावट थी because Kharif crop अब आ चुके हैं, जैसे कि winters गए. Almost we are about to dive into March, so Kharif crops are there. Tanisha, I won't just say that it's change in prices, but it is the weighted average. As to what I know, maybe you can check it once. Okay, but it is the weighted average. Index जब भी निकालते हो किसी का भी, तो वो आप उसको average form में निकालते हो, right? चलो, गिरावट या reduction, yeah, that's correct. चलो. Further, the writer says the RBI in its monetary policy statement this month cited, that means stated, the bumper Kharif crop, rising prospects of good Rabi harvest. Prospect is noun that means expectation or estimation. Expect sambhavna. Sambhavna. That is what we're talking about, the prospect. Now prospect of a good rabi. जब खरीफ क्रॉप अच्छी हार्वेस्ट हुई है तो राबी क्रॉप भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अच्छा हार्वेस्ट होगा. Large winter arrivals of key vegetables and soft eggs and poultry demand on avian flu fears. What is avian flu? Avian. बताओ जल्दी avian. Avian किससे associated है? If you know about aviary. Avian, Rahul, yes, possibility, yes, prospect will be possibility, that's correct, Rahul. Avian किससे related है, guys? Quickly try an answer. अच्छा एवियन पहली बार सुना. एवियरी सुना है राहुल? एवियरी एंड एवियन, दे आर रिलेटेड, दे आर इक्वली रिलेटेड राहुल.
ओके, एवियन अगर फ्लू की बात कर रहे हैं तो ये एवियरी इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, राइट? सो ये बर्ड से रिलेटेड, तो जो बर्ड फ्लू की हम बात करते हैं दैट वुड बी एवियन. ओके राहुल, आई होप नाउ इट्स क्लियर. यस राहुल, क्विकली टेल मी एवरीवन. ओके, तनीषा ने कहा श्रिया कि राहुल डिजीज. यस दैट्स करेक्ट. नो अनूप, नॉट एट ऑल. ओके चलो, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड देन. सो वो कहते हैं कि लार्ज विंटर अराइवल्स जो रहे उससे देखा जा रहा है दैट मे बी द राबी क्रॉप और हार्वेस्ट विल डेफिनेटली बी गुड. As key factors that augured well for the months ahead. Augur, that means, augur is a verb. That means to हम जैसे future estimate करते हैं ना, to estimate. अंदाज लगाना या भविष्य बताना, भविष्यवाणी करना. तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये हमें भविष्य बता रहे हैं, ये जो कुछ मेजर्स हैं या कुछ फैक्टर्स हैं कि आगे आने वाला समय अच्छा होने वाला है. ठीक है. But the central bank was mindful of the risks too, especially with regard to food costs, where the latest data had brought to the fore concerns over the prices of pulses and edible oils. Now I'm wiping off the screen to explain you this phrase, that is bring to the fore. Now it says, the writer says that all these factors with regard to the food costs have, the latest data we have come to the fore, the concerns of the prices of pulses and edible oils. इनके prices पर थोड़ा सा there is concern. तो bring to the fore is a phrase which means to disclose or to bring into focus, सामने लाना. ठीक है, फोकस में कोई चीज को लेकर आना, दैट इज bring to the fore, that is to disclose. Okay, now while inflation in pulses and products was at 13.4%, that for oils and fats stood at 19.7%. तो अभी inflation pulses और products में 13.4 था, oils और fat में 19.7% रहा है. This is again something that can bother a common man. Eggs and meat and fish, two other key sources of protein, both posted double-digit rates of 12.9 and 12.5%. Now you see the figures are there in front of you. With price gains in the former barely registering any telling impact from the avian flu outbreak. तो जो outbreak था जो avian flu का, उससे अभी कोई खास impact नहीं पड़ा है. Inflation तो फिर आप देख रहे हो, there is nothing, no drop. Now, with the favorable base effect beginning to wane, that means going down. Inflation moderated by more than 100 basis points in February 2020 to 6.58 before slowing to 5.84 in March. The outlook is far from reassuring. The outlook, that is the view, is far from reassuring. अभी काफी दूर हैं चीजें. अगर हम सेटल होना चाहते हैं या हम अश्योर्ड होना चाहते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं, अभी काफ़ी दूर है. बिकॉज अभी इन्फ्लेशन मॉडरेट तो हुआ है बट इट्स नॉट दैट क्लोज. ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है बट इट्स नॉट दैट लो. ओके चलो, इट्स गोइंग डाउन बट नॉट दैट satisfactorily. Any doubts guys? Clear? Okay, Tanisha says cleared. Okay, Sanjeev, yes, aviary is a place where जहाँ हम birds को रखते हैं. Further, the writer says, of particular worry. Okay, Anoop, thank you for your response, Anoop. Now, of particular worry is the trend in input costs for multiple sectors in the real economy, including manufacturing. From automobile manufacturers to builders, rising raw material costs are beginning to force them to pass on the impact to the end consumers. अब अगर raw material का cost जो है it is increasing, then these builders, they are forced, okay, and because they increase the cost, then the end consumers also have to face the huge costs. They have to bear that.
and this at a time when demand is still to gain a firm footing. अभी भी डिमांड एकदम अभी सब कितना फर्म फुटिंग मतलब अपना पैर जमाना, अभी डिमांड इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है तो भी ये हम देख रहे हैं कि इतना प्राइस में हाइक है. The latest IHS Mark IT India Manufacturing Purchasing Managers Index points to the sharpest increase in purchasing costs for more than 2 years as a lingering supply side squeeze. Lingering, that means lying. Okay, lingering जैसे हम कहते हैं ना मंडराना, बिना किसी काम के या मतलब के कोई चीज बस पड़ी हुई है. So it was serving as a lingering supply side squeeze. अभी उनका जो पॉइंट शार्प इंक्रीज रहा था परचेजिंग कॉस्ट में 2 साल से, for more than 2 years there was rise in the purchasing cost guys, and this was lying there. वो बिल्कुल वहां पर जो इंक्रीज था वो पड़ा हुआ था, वहां कुछ भी कमी नहीं हुई थी. फैंड इन्फ्लेशनरी प्लेजर्स, फैंड मतलब इन्होंने और उस चीज को हवा दे दी, इन्फ्लेशन को, और मैन्युफैक्चर ने क्या किया, रेस कर दिया प्रोडक्ट प्राइस एट द फास्टेस्ट पेस इन ओवर अ ईयर. तो अभी देखो अननेसेसरली अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, 2 साल तक चीजें ऐसे ही रही, कोई उन्होंने उस चीज में कोई ड्रॉप नहीं किया, तो जब ये चीज हो रही है तो उन्होंने और क्या किया, उस चीज को और तूल दे दिया, and then it got up and up and up. Add to the mix the unrelenting. What is unrelenting guys? Unrelenting is an adjective. Unrelenting and dizzying climb. Dizzying मैंने आपको कहा था unsteady. Unrelenting का मतलब unreliable, जिस पे भरोसा ना किया जा सके. That is unrelenting. Unrelenting climb in transportation fuel prices to newer and newer record highs in recent days, and the outlook for inflation becomes distinctly darker. भाई पेट्रोल के प्राइसेस भी इतने बढ़ गए हैं, जो फ्यूल प्राइसेस भी इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि हम अगर इन्फ्लेशन की को देखें, अगर उस पिक्चर को देखें, देन वो बहुत इट इज डार्कर, इट इज गेटिंग डार्कर, मतलब वहां अंधेरा होता जा रहा है. बिकॉज फॉर अ कॉमन मैन लाइक अस इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू मैनेज आवर एक्सपेंसेस. व्हाटएवर अमाउंट यू अर्न now it's getting up and up. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कहते हैं ना कि महंगाई, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है. I hope it is clear to each one of you. Unrelenting, जिसपे जो अनरिलायबल है, विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, राहुल तनीषा कह रहे हैं ओके, चलो लेट्स गो अहेड देन. Lastly, the writer also added diesel, the main fuel for the freight carriage, has now exceeded 80 per litre and is bound to feed into prices of almost everything being transported across distances. You see 80 rupees diesel. From fresh produce to intermediate and finished industrial goods, diesel का यूज होता है. अगर आप ट्रक्स की बात कर लीजिए, बड़े बड़े जो गाड़ियां होते हैं, सो अगर डीजल का प्राइस इतना महंगा है तो जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा होगा ही. With banks still flush with liquidity, policymakers need to maintain a strict vigil. Vigil is noun, that means nazar. ठीक है, cautiousness. उनको उस चीज पर ध्यान रखना होगा, नजर रखनी होगी. From to keep inflation को रोक के रखना हो, रिसर्च ना हो, बढ़े ना, and posing a threat to macroeconomic stability. On the whole, अगर प्रॉब्लम आई इकोनॉमी में, then it is going to be a big trouble. Exactly, Rahul. That may be. Now, as Rahul has come up with a point that diesel petrol का price बढ़ा के probably government is trying to sell the electric vehicles. Maybe this is one such strategy, you never know, because you never know what government is planning to do, right? That may be a case. Chalo. Abhi quickly, I guess, yes, Dr. Jakal says, he gives a thumbs up. Chalo. आगे बढ़ते हैं फटाफट से. मुझे ये 5 words के I want meaning from you guys. Stubbornly, outlook, unrelenting, augur, appreciable. Stubbornly adverb था, outlook noun, unrelenting अभी किया adjective, augur verb था, appreciable adjective.
So now quickly give me the meanings. I have discussed all the words with you guys. Now I want the meaning to these words from your end. Rahul, Anup, Tanisha, Dr. Jakal, Kaptan, Sanjeev, Anup, Kunal, Deepak, quickly. Ariel, yes, that is Ziddi, adamant. In an adamant way, that's correct. Ziddi, yes. Kunal, unrelenting is unreliable, yes, that's correct. Or not reliable. Sanjeev, augur matlab pravas, yes, augur matlab to tell future or to talk about future. Appreciable जो किया जा सके, yes, something that's favorable जो कि आपके हक में हो सकता है, जो संभव है. What is that? Drishtikon. Yes, outlook is Drishtikon. Yes, Drishtikon. That's correct. Viewpoint. Nazariya. Unreliable. Yes, Kaptan. Yes, Kunal says for will be future batana. That's correct, Kunal. Very good. तारीफ के काबिल, appreciable. Yes, that's correct, Kunal. देखो तारीफ के काबिल तो नहीं, बट यहाँ वैसे तो appreciable का मतलब तारीफ के काबिल हो सकता है, बट यहाँ पर क्या था, ऐसी सिचुएशन जो अप्रिशिएबल है, मतलब सिचुएशन जो आपके फेवर में है, जो फेवरेबल है. ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप सब ने. इसका मतलब आपको ये चीज जो है बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है. That is really great and I am grateful to know that आप सबको ये points जो है इतने अच्छे से समझ आए. चलो guys, great. Any doubts that you have now? Quickly tell me if you guys have any doubt. A kaptan, applaudable is applaudable. Applaudable synonym है plaudable के लिए और praiseworthy के लिए. इसका मतलब होता है प्रशंसनीय. प्रशंसनीय मतलब तारीफ के काबिल. ठीक है, चलो ठीक है राहुल, अब मैं रोज एक ग्रामर टिप भी दूंगी. चलो आज की ग्रामर टिप अभी बताती हूँ. यहाँ पे क्लियर है सबको? कप्तान, आई होप आपका जवाब आपको मिल गया है आपके क्वेश्चन का. मैं एक बार स्क्रीन वाइप ऑफ करके आई एम गिविंग यू वन सच ग्रामर टिप. चलो एक ग्रामर टिप देती हूँ, याद रखो. आइडियली टू के साथ क्या यूज करते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म. इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, राइट? जैसे हम कहते हैं टू ईट, टू सर्वाइव. तो ये क्या है? ये बेस फॉर्म होता है. ये क्या होता है? बेस फॉर्म होता है. ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है. अच्छा, कंफ्यूज कभी मत होना, जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है. ये क्या होता है? ये प्लूरल फॉर्म होता है. पर अगर मैं ईट्स लिखूं या सर्वाइव्स लिखूंगी तो ये सिंगुलर होगा. ये क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होंगे. ठीक है, अब जो एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है गाइस. लुक फॉरवर्ड टू, विद a view to, accustomed to, addicted to, okay, lead to. ये जो जितने भी फ्रेजेस मैंने लिखे हैं गाइस, मुझे फटाफट से बताओ. अगर मैं कहती हूँ सेंटेंस, अगर मैं कहती हूँ we look forward to see you or to seeing you, क्या होना चाहिए? We look forward to see you soon. We look forward to seeing you soon. जल्दी से बताएंगे. वन, see या seeing? जल्दी से, वन या टू? राहुल, तनीषा, कुणाल, कप्तान, जल्दी से बताएंगे मुझे. We look forward to see you soon or we look forward to seeing you soon. क्या होना चाहिए? क्विकली बताएंगे गाइस, फटाफट से.
ओके यस, राहुल कह रहे हैं मीट यू या सी यू, संजीव कह रहे हैं सीइंग होना चाहिए। बिल्कुल संजीव का जवाब बिल्कुल सही है, सीइंग होना चाहिए। राहुल सीइंग होगा, नॉट सी। द रीजन इज ये एक्सेप्शन में आता है इन सारे फ्रेजेस के साथ, भले ही ये टू पर एंड कर रहे हैं बट इनके साथ हम हमेशा ing फॉर्म यूज करते हैं। Always we use ing. So it will be look forward to seeing, with a view to seeing, with a view to learning. Okay? Yes, Tanisha, Kaptan, Kunal, absolutely correct. Very well done, guys. तो ये phrases को याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है? तो you can take a screenshot, you can make note of it later on. Yes, 2 plus verbs, ing form. Yes, that's correct, Kunal. चले, so we come to an end here for today's session. Any doubts? like जैसे राहुल ने मुझे कहा एक ग्रामर टिप, तो अब से हम रोज एक ग्रामर टिप जरूर करेंगे आपके साथ डिस्कस। ओके, चलिए guys, then I will be joining you again in the next session. Not to forget to join the quiz session tomorrow. Thank you guys for joining in. Thank you so much.